Since its independence in 1947, India has become the largest democracy in the world and one of the fastest growing economies of modern times. Its constitution envisions the state as an egalitarian society where 1.2 billion citizens are all equal before the law. However, this vision does not translate into reality for everyone in India. An ancient caste system stratifies society into a hierarchy according to the assigned occupation of each caste. The Dalits, the official name for the untouchable castes, are at the very bottom of this caste system. Despite the promise of equality, certain segments of this population continue to be confined today into a modern-day form of slavery. In rural Rajasthan, believers make their way to the temple at the center of the village. They cleanse and purify themselves before entering the site of the Hindu deities, bearing gifts into the sanctuary. But one family can never be pure. Behind the temple, Jamna and her husband clean the temple's surroundings. They must also perform the dirtiest task of all. They are obliged to manually remove the excrement of all the higher castes. With tin plates and weed brooms, they collect the feces from open defecation sites, private homes, and dry latrines, a form of toilet where excrements must be scraped through holes and open drainage lines. This practice is called manual scavenging. It is Jamna's task in life because of the caste she was born into, the Valmiki caste, the lowest among all untouchables. जब से मेरी शादी हुई, मेरी सास ने काम करती, गंदी मेला उठाती, तो मेरी सास मेरे को बोली ये काम अपना कर्म है, अपन को करना है इसलिए। तो जब मेरे सास ने बोला तो जब से मैं ये काम कर रही हूँ, मेला उठा रही। मेरा पति भी उठाता है, मैं दोनों साथ में रह के उठाते हैं। जाति के हरिजन है, ठीक है, ये हमारा काम है, ये हम काम नहीं करेंगे मेले उठाने का तो हम क्या करेंगे घर पे। The impurity of her caste's occupation has dictated every aspect of her life. She cannot physically touch, sit next to, or share the same water source as any other village member who see her as inherently polluted. She goes house to house to collect stale bread and torn clothes from the upper castes, who feed and clothe her in return for her daily caste-based work. हम गांव वाले आते हैं, हमारे को तुम काम करने की भी नहीं आती हो, खैर काम करने की भी नहीं आती तो मेरे को भी ओल भी मिलता है, मेरे आदमी को ओल भी मिलता है। हमारा काम है तो कर्म गंदी टट्टी उठाने का काम है हमारा। तो घर पे आके बोला है हमारे को, तो सब मैं से बोला मैं आ रही हूँ गंदी उठाने के लिए, ठीक है। The bread she collects is the primary source of food for Jamna and her family. अब हमारी लड़की शादी होके जाएगी तो करेगी वो, तो कैसे वो आगे वो करते हुए सास से करता है तो वो भी करेगी, वही करेगी वो, तो वो करेगी, वो जागीर के तो काम करेगी, वो घर पे बैठी क्या करेगी। अब वो आएगी तो मैं छोड़ूंगा काम, वो करेगी नहीं, दूसरे को नहीं करने थे। हमारी जागीरी है, हमारे की बापोदी है, वो तो बाप दादा की है, हमारी पीढ़ी से चल रहा है हमारा काम। Jamna is not a unique case. She is one of over 1 million manual scavengers who clean the excrements of their villages across India. Generation after generation, this task is passed on through the Valmiki women, who become the breadwinners of their families.
these women are charged with other polluting tasks, including the disposal of dead animal carcasses without any protection, leaving them exposed to diseases and numerous skin infections. Their children also bear the consequences of their mother's dirty work at school, where they are made to sit at the back of the classroom and deemed so polluted that they are not allowed to touch books. Oppressed by their caste and by their gender, these women are particularly targeted for sexual violence and other forms of atrocities, and are forced by their families and their communities to continue this denigrating practice. In 1993, the Indian government defined manual scavenging as a sanitation problem. It banned the practice and created economic rehabilitation schemes for the community to give them other sources of income. However, these schemes were primarily targeted for men and regarded manual scavenging merely as a form of employment that could be eliminated through economic intervention. They failed to acknowledge that 95% of manual scavengers are women, and that the practice is in reality rooted in caste-based and gender-based oppression. As a result, these schemes were unable to abolish the practice and did not address the social ostracism and stigma that Valmiki communities have to face. है ना, अभी गंदी का काम ही सब मरते दिन में वही काम है, मरेगा जब छूटे गए। In the year 2000, 3 Dalit workers, including a child laborer, were killed by an explosion in an illegal fireworks factory in the state of Madhya Pradesh. The explosion occurred due to the negligence of upper caste owners. The death of these Dalit workers was not investigated, absolving the owners of any responsibility. This event compelled 4 young Dalit activists to start a campaign for the civic and human rights of untouchable communities within their state. They formed a grassroots organization called Jan Sahas, or People's Courage. They were determined to destabilize the caste structure from its very base by eradicating the most egregious form of oppression within the caste hierarchy, manual scavenging. क्योंकि आज जब आप जीते हो समाज में तो आप द्वितीय दर्जे के नागरिक की तरह जीते हो, आपको इक्वल सिटीजन माना नहीं जाता है। क्यों? हमको लगा कि कास्ट का जो पूरा हायरार्की है, कास्ट का जो पूरा स्ट्रक्चर है, उसमें अगर कोई काम करना है तो हमको अपने काम की शुरुआत करना चाहिए मैनुअल स्क्वेंजिंग कम्युनिटी से। और 2000 से हम लोगों ने ये कैंपेन शुरू किया कि हमारे देश में कोई भी महिला को मैला उठाने का काम नहीं करना चाहिए, कि कास्ट के वजह से, जेंडर के वजह से लोगों को ये काम करना पड़ रहा है। तो इससे ज़्यादा इनह्यूमन प्रैक्टिस कोई हो नहीं सकती। In the initial stage, the activists established a relationship with manual scavengers and their families in order to better understand the complexities of their situation. और जब महिलाओं से एक थोड़ा दोस्ताना रिश्ता हमारा बन गया था, तो फिर तब हम लोग महिलाओं को ये समझाते थे कि देखिए, एक तो ये काम जो मैला ढोने का काम है, ये गलत काम है ना, गंदा काम है। इसकी वजह से हमें छुआछूत, भेदभाव, हर प्रकार के अत्याचार सहने पड़ते हैं। These 4 women were part of the first generation of liberated scavengers who had the courage to collaborate with and later on lead Jan Sahas. और करीबन ये तो परंपरागत से चला आ रहा है, जिसको लोग जागीर बोलते हैं। कुछ लोग अपना निजी काम समझ के ये करते हैं और ये वाल्मीकि समुदाय करता है ये काम। और मैं मेला ढोने का काम करती हूँ वाल्मीकि समाज की मैं। और इसमें हमारे को झाड़ने में पहले हमको समझता नहीं था कि कैसा ये झाड़ना छोड़ना है, कैसा व्यवहार है। मुझसे बदबू भी आती है और मतलब हर तरह के ये फोड़े फुंसी हो जाते हैं हाथ पाँव में, सिर में बाल झड़ने लग जाते हैं। जाके ये काम दूसरे दिन जाके काम करना पड़ता है। वो बारिश में तो काफ़ी परेशानी आती थी, बारिश में तो पानी में पूरे खराब हो जाते थे, वो अपने ऊपर ही गिर जाता था। Jan Sahas also worked with another group of women scavengers who did not belong to the Hindu religion. हम हेले समुदाय, हेला का मतलब है मुस्लिम। मुस्लिम है पढ़ना, वो बहुत पुराने के बात है, जो इस हिसाब से चलते थे तो वो इसमें है। हम नहीं तो न्यू तो मुस्लिम है जैसे, पर ये काम पिछड़े वर्ग में करा हुआ है तो हम पिछड़े वर्ग में ही हैं। Throughout the ages, Hindu untouchable Dalits were lured into Islam. They hoped to escape their caste-based oppression by gaining equality in the eyes of a single god. However, their caste stigma was so strong that it carried over into their new religion.
To this day, caste prevails in Muslim communities, where the lowest caste are the hellas, the manual scavengers. स्कूलों में आती थी दिक्कत बच्चों को, मदरसे में, मस्जिदों में, सब में दूर बिठाते थे, स्कूलों में सबसे पीछे, और किताब को भी हाथ नहीं लगाते थे, और मटकी से पानी भी नहीं पीने देते इनको बच्चों को। Unlike Hindu Dalits, Muslim untouchables are not protected by law against caste-based discrimination and atrocities, and cannot benefit from government rehabilitation schemes. Even if Hellas and Valmikis come from different religions and have a different legal status, they are nonetheless subjected to the same kind of oppression. कोई के घर एक रोटी देते, किसी घर एक साड़ी देते फटी हुई और 5 रुपए देते, वो भी रोटी ऐसी डालते टोकरी में, अब दूर से मतलब छित करते अपन से कि ये मेला ढोने का काम करते हैं, इनको हाथ नहीं लगाना अपन ने। हाँ, वही जैसे कि कहीं पे अपन अगर पानी भर रहा है, एक ही समूह में पानी भरते जैसे सब तरफ के लोग, तो वहाँ पानी भरने जा रहा वाटर में, तो वो बोलते कि अब हमारा बर्तन नहीं भरा जब तक आप हाथ नहीं लगाओगे, भले उनका वो अंदर डालने का है, वो बर्तन ढूंढ रहा है उनका, अपन हाथ नहीं लगा सकते उस बर्तन को, वो हटा ले, उसके बाद ही अपन पानी भरते थे ऐसा। After establishing relationships with the women, Jansa has held community meetings to inform them about their legal rights. हमारी अंडरस्टैंडिंग है कि ये एक कास्ट बेस्ड स्लेवरी है, और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि जब गुलामों को आप गुलामी का एहसास करा दोगे, तो गुलाम वो जो बेड़ियों में जकड़ा है वो खुद तोड़ने के लिए कोशिश करेगा। कि ये काम जो है कानून के खिलाफ भी है और इंसान की एक गरिमा के खिलाफ भी है, और हमारे देश में, हमारे संविधान में भी ऐसी कल्पना नहीं है कि इंसान इस तरह के काम में इस तरह से रहे, एक तरह की बेगार है ये। But this information was not enough. The scavenging community resisted, arguing that their wages were a necessary source of livelihood. और ये सवाल रोजगार का है, पैसे का नहीं, ये तो आपकी इज्जत का सवाल है, तो इसमें कोई भी लॉजिक नहीं है। कोई व्यक्ति अगर बाहर जाके कोई दूसरा काम करना चाहे कि मुझे दूसरा काम करना है, तो उसको ये आज़ादी नहीं है, वो फ्रीडम नहीं है, वो स्लेव है एक तरह से, कि आप इस जाति में पैदा हुए हो, आपको यही काम करना पड़ेगा। जब उनको एक पूरा आंकड़ा बताया कि एक साल भर में अगर आप इतने घरों में सफाई करते हैं तो इसमें कितना पैसा मिलता है, उसमें क्या क्या मिलता है। Most manual scavengers earn less than $5 a month. Jansa has asked the women whether the meager compensation justified the discrimination that their children faced at school. तो इनने 9वीं पढ़ाने छोड़ दिया इसी कारण कि तुम्हारी मम्मी तो ये गंदा काम करती है, मतलब इन सहेलियों भी साथ नहीं रहती थी इनके। In many cases, Valmiki and Hela children were the ones who persuaded their mothers to leave manual scavenging. बोला भी कि काम छोड़ दो, जहाँ मम्मी काम करती थी वहाँ के सभी लड़के यहाँ स्कूल आते थे पढ़ने, तो वो बोलते थे कि तुम तो जाओ, हम तो तुम्हारे साथ नहीं खेले, तुम तो भंगियों के लड़का लड़की हो। However, even when women decided to leave the practice, they often faced great resistance from their villages. Jansa has recognized that in order to eradicate manual scavenging, they needed to engage the community as a whole. This meant working with the women's families and also engaging government officials and upper caste villagers in the process of change through a public display of liberation. In a bold and symbolic act, manual scavengers burned the baskets they had previously used to collect the excrement of upper castes, sending a clear message to the entire village. With the support of Jansahas, the women demolished all the dry latrines in government buildings. कि आप झाड़ने क्यों नहीं आ रहा है, तो मैंने क्या कि गरिमा अभियान की तरफ से हम मेला ढोना सब बंद हो रहा है। मैंने क्या कि नोटिस भी निकले, सब घरों घर नोटिस भी दिए थे उनको, सरकारी काम उन दिए थे कि ये तुम लेटिंगों ने बना लो, फिर भी उन्होंने धीरे धीरे तो हमने एक तरह से ये बनाया कि हम पीड़ित नहीं हैं, हम विक्टिम नहीं हैं, हम बदलाव के लीडर हैं। तो फ्रॉम विक्टिम टू लीडर। लोग घर आके कहते थे कि जब 50 देते हैं हम तुम्हारे 200 रुपये देंगे, पर ये काम कर लो वापस तुम हमारे घर आके। तो हमारे घर वालों ने सबने बोला जैसे एक ही जुट होके सबने कि हमें ये काम नहीं करना तो नहीं करना, क्योंकि पुलिस की धमकी देती कि ज़्यादा करोगे तो पुलिस हमारे को भी जेल होगी और जो करवाएगा उसको भी जेल होगी। तो मैं कुछ दिन तो गई नहीं मैं झाड़ने वहाँ पे। मैं तुम शौचालय कर रहे आप खुद ही फेंको, ये मैं नहीं फेंकूँगी। हमारे को किसी ने लालच नहीं दिया छोड़ने का, ना किसी ने पैसे दिए, हमने मान सम्मान के लिए छोड़ा। This was only the beginning. These liberated women joined Jansahas and began going from village to village in popular marches called yatras
to spread the message of liberation from manual scavenging. हाँ, जो मेला ढोने का काम जो यहाँ पर भौरासा में बंद हुआ, उसके बाद हमने कई जगह रैलियाँ निकाली, 4-4, 5-5 दिन जगह हम बाहर रहे और जो वाल्मीकि समुदाय उन्हीं को समझा और वो काम उनके द्वारा भी बंद किया। जो एक तहसील से बंद हुआ, तहसील से फिर एक जिले में। आपको भी छोड़ना है और आगे जो हमारी आगे वाली जनरेशन आने वाली है ना, उन्हें भी इस चीज़ से हमें बाहर निकालना है। वो करते गए, फिर दूसरे गांव भी हम दूसरों औरतों को समझाने वास्ते गए कि अच्छा काम नहीं है, गंदा, तुम छोड़ दो। हमने यात्रा भी निकाली। तो जितनी हमने यात्राएं आयोजित की थी उसमें मुख्य लीडरशिप इन महिलाओं की, बहनों की थी, पर फिर धीरे धीरे महिलाओं की अपनी ताकत बन गई, तो वो भी उनके अंदर से एक बदलाव करने की चाहत भी थी। तो जनसास का काम ज़्यादा एक थोड़ा मदद करना पीछे से। In 2012, Jansahas organized the first ever nationwide yatra, which traversed 10,000 kilometers and gathered over 50,000 participants. At the end of the yatra, Jansahas marked the liberation of over 15,000 women in a span of 10 years. गरिमा आंदोलन को बधाई देना चाहता हूं। हमारे समाज पर जो कलंक है ये, इसको हम जल्द से जल्द। Jansahas's political advocacy brought the issue of manual scavenging to the forefront of the government's attention and finally succeeded in changing the national policy. सरकार एक नया और प्रभावी कानून बनाने पर विचार कर रही है ताकि हाथ से मैला उठाने के घिनौने चलन को बंद किया जा सके। संसद के इस मॉनसून सत्र में एक नया बिल लाया जाएगा। इस बिल के जरिए मैला ढोने की परंपरा पर रोक लगाई जाएगी। This achievement gave Jansahas widespread recognition from numerous international organizations and brought the focus of their struggle to a greater audience. Article 17 of the Indian Constitution bans untouchability, and in a remarkable piece of legislation last year, the Indian Parliament also prohibited people from using dry latrines, and it prohibited people from hiring people to clean the dry latrines. This piece of legislation was the result of years of struggle by manual scavengers throughout India. Jansahas is probably the one organization in India that is most effective on countering and fighting manual scavenging because of their approach, in the sense that they engage with the community in its entirety. We want to congratulate Jansahas for a remarkable advocacy job, and mostly congratulate Parliament and the Government of India for passing this legislation. It's truly impressive, and of course a model for other countries in the world to follow. For the first time in history, the United Nations and the European Union have recognized manual scavenging as a form of caste-based oppression. Comes to an immediate end. As for the courageous women whose actions changed so many lives, their lives have changed as well. Turanbai went to work as a civil servant in a public kindergarten. She cooks for the children and serves them meals, a task that she was previously forbidden to do because of the untouchability and stigma attached to being a Valmiki woman. She also works with Jansahas, teaching liberated scavengers how to sew and make garments. Chamanbi and Shewantibai are also engaged in the garment business. Their communities are part of a Jansahas initiative for sustainable livelihood, where both Hindu and Muslim liberated scavengers earn their living as seamstresses. This new initiative has significantly marked their lives. बदलाव तो बहुत कुछ आ गया है, जैसे बहुत बदलाव तो सब अच्छा है। अपने बच्चा हम ये काम करेंगे तो हमारे बच्चे भी सीख जाएगी, आगे जान के कुछ अच्छा कर सकती है, अच्छा पढ़ लिख जाएगी। कोई जो हमारे में कमी रही वो हमारे बच्चों में कमी नहीं होना चाहिए। यही कि जब अपन उस टाइम पर बंधुआ मजदूर के तौर पे थे कि भाई किसी का कोई काम बताएगा तो ही करेंगे, और आज अपन निजी है, स्वतंत्र है कि आज अपन अपना निजी कुछ काम तो कर सके थे, इसलिए स्वतंत्र है। After liberation, Akhtar B and her family fought discrimination and opened a business to sell bangles and papads.
Through her courage, she has established a new and better life for her children. कहीं भी उठ बैठ उठ सकते हैं। अब बिल्कुल इतना भेदभाव नहीं रहा जैसे पहला था। जैसे हमारे साथ पहले स्कूलों में भेदभाव होता था, यहाँ मोहल्ले में होता था, बरमे पे होता था, सभी जगह हमारे साथ भेदभाव होता था। अब नहीं होता हमारे। Though Jansahas has had great success since its founding in 2001, the battle against caste-based oppression is far from over. In many provinces, the government continues to employ Valmikis in a form of institutionalized manual scavenging to remove excrement from ditches and septic tanks. Though Jansahas has liberated 15,000 manual scavengers, there are still over 1 million women across India that are subjected to this degrading practice. Jansahas recognizes that in order to decisively combat this form of oppression, it must go beyond questions of liberation and include a comprehensive process of rehabilitation. लेकिन हमारा मानना है ये सिर्फ इकोनॉमिक क्वेश्चन नहीं है, ये सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल क्वेश्चन है। तो इसका जब रिहैबिलिटेशन करना है तो तब भी आपको सोशियो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल रिहैबिलिटेशन करना पड़ेगा। The Jansahas team has expanded its strategy to incorporate a complete rehabilitation process that transforms the lives of these women in a holistic way. It has created a program for sustainable economic livelihood in which cooperatives of liberated manual scavengers work in small incense factories. These incense sticks are now used in the temples and homes that the women were previously forbidden to enter. The program has also initiated small sewing businesses, where liberated women make portfolios, mobile pouches, clothes, and bags for sale, overcoming the discrimination they used to face. From receiving starvation wages, they now earn proper pay, providing a dignified source of income for their families. These two initiatives are pilot programs that Jansahas hopes the Indian government will replicate in the near future on a mass scale. Working with the new generation is also part of Jansahas' transformative strategy. To ensure the intergenerational impact of liberation, Jansahas is supporting more than 600 girls from liberated manual scavenging communities through scholarships and financial assistance to complete their education. It has also opened over 200 dignity centers in liberated villages across 5 states, where the children of this community are provided with supplementary education. They receive social inclusion models and capacity building courses, including computer skills and English. From Maharashtra, Madhya Pradesh, Bihar, Uttar Pradesh, and even Rajasthan, the Jansahas team is committed to offering these women the possibility of liberation and the chance for a new life. क्यों तरसावे हो मन सकल दिखाओ जी।